हम ओके, सो 13 है क्या? Chloroprene. Chloroprene is nothing but 2-chloro 1,3-butadiene. Same 1,4 addition. You get neoprene. I don't know its applications where neoprene is used. Sorry? Volume. on है on. ओ ओके, ज्यादा तो नहीं हुआ. So R2SiO enzymes, the 13th one. I never thought we will cover so fast. 12 hours में almost polymers तक पहुंचना, it's a good achievement. R2SiO enzymes, they are called silicones, rhyming with, they rhyme with ketone. RSI double bond O or RCO R. These are ketones and this is silicone. So मेरा list of concepts में तुमको दिखेगा ketone silicone analogy comparison. Ketone silicone analogy करके 150 points दिया ना? दिया कि नहीं? Most important points for IIT JEE करके. ठीक. Now SiClClCl 2Na CH3Cl dry ether. What reaction is this? Wood reaction. Woods reaction. ये कार्बन है, ये भी कार्बन है. कार्बन सिलिकॉन दोनों एक ही बात है. नाउ NaCl रिमूव करो, इधर भी एक CH3Cl 2Na NaCl रिमूव, you get CH3 SiCH3ClCl. इसको हाइड्रोलाइज करो H3O प्लस, क्या होएगा? HOH HOH, you get silicone, डाइमिथाइल सिलिकॉन आया. हाँ, क्या डाउट है तुम्हारा? सर सिलिकॉन के ऊपर 4 OH टिक सकता है ना? टिक सकता है, लेकिन इन दिस केस the water is removed because of the prospect of a highly stable polymer बनने का भी मौका है ना? CH3SiO CH3 CH3SiO CH3 CH3 SiO CH3. Come on, break the bond and make the bond. SiO SiO. Linear polymer. (2015) which of the gives a linear polymer and which terminates the polymerization? ये देखो, ऐसा दो हाथ वाला रहा तो क्या होगा? 2 हाथ, सबके लिए 2 हाथ है. They can form a human chain. हाथ मिलाओ, उनसे मिलाओ, ठीक है? ह्यूमन चेन हो सकता है. अगर एक ही हाथ वाला आ गया तो दूसरा हाथ नहीं है इनका, संजीव कुमार, ठीक है ना? उनके यहां से पोलिमराइजेशन खत्म हो जाता है. सो यू हैव सिलिकॉन OH OH on 2 sides, you will get only a linear polymer. इधर पोलिमराइजेशन होगा लीनियर. अगर 3 OH रहा तो 3 हाथ वाला क्या करेगा?
Either. What is it called? Branched silicon, or can also be called network silicon. एक हाथ वाला है तो he will terminate the reaction. RSIR, ROH, बस he is the last in the chain. So 2015, which of the following gives a linear polymer? वहां एक हाथ वाला है और किसी को तो एक ही हाथ भी नहीं है, ये प्योर संजीव कुमार है. What can he form? He can only form a dimer. OH chain, it can only form a dimer, like silico ether, SiOSi. Now, fourteenth point, and the heading all about allotropy. All about allotropy. What are allotropes? Different forms of the same element. Shall I say different physical forms, same chemical properties. White phosphorus and red phosphorus are allotropes. White and red. Oxygen and ozone again are allotropes. Diamond graphite, बहुत सारे allotropes है. Diamond, graphite, bone charcoal, ये charcoal, वो charcoal, fullerenes, sorry, fullerenes है. And not only that, आजकल एक सिंगल एटॉमिक लेयर बन रहे NCL में, नेशनल केमिकल लैबोरेटरीज है ना, ग्राफीन. नैनो भी नहीं, वो पाइको है, ठीक है ना. ग्राफीन, सिंगल एटॉमिक thread, a thread of atoms, means in a wire with the diameter of a hair, you can give 5 crore connections. 5 crore can be transferred. Of course, nowadays everybody is going behind the spectrum only, and when the 5G comes, you don't require any wires. 5G, अभी 4G है ना, 5G आया तो no towers are required, no radiation, nothing. That is avoided. Now, white and red. Sulfur का rhombic, monoclinic, etc. plastic, alpha, beta, gamma. Now, what are polymers? Polymers. बोलो भाई. Different forms of same element, or even or compound. Compound also forms different polymers. Compounds also show this polymorphism. So polymorphism can be used for both elements and compounds, but allotropy is strictly exclusive for elements. Now, different forms of the same. Now, quartz, it exists in so many crystalline forms. Alpha quartz, beta quartz, gamma quartz. Alumina, it also exists in alpha, beta, gamma forms. Alumina. What is alumina? It is a part of the precious stones. You know what? Ruby, sapphire, emerald, those precious stones contain Al2O3 only. Color. Color is due to Al2O3 by itself is not colored. Color is due to impurity. You are paying lakhs of rupees for those impurities. Copper impurity raha to it will be blue. Cobalt raha to I think
रेड एंड रूबी, पिंक है क्या? आई डोंट. एंड क्रोमियम रहा तो डेफिनेटली दैट इज ग्रीन, एमराल्ड. नाउ राइट, P4, P4O6, P4O10. प्लीज लुक हियर. जैसा मैं लिखता हूं ऐसा ही लिखो. पहले 3 ट्रायंगल लिखो. ट्रायंगल लिख के वेट करो. ऐसा P, P, P. नाउ एनसीईआरटी का तरीका क्या है? गंदा एक प्लस लिखना, चारों बाजू कनेक्ट करना. दिस डजंट टेल अस एनीथिंग, वेयर एज दिस टेल्स दैट द फोर्थ वन इज एट द वर्टेक्स. नाउ P4O6, दोबारा P4 लिखो. P, 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 P. Insert oxygens in every bond. हर एक बॉन्ड में 6 ऑक्सीजन इंसर्ट करो. सो POP बॉन्ड्स कितने? 6. POP. नेक्स्ट P4O10. यह लोन पेयर है, पिरामिडल है. PPP. फोर्थ फास्फोरस यह P4O6. बाकी 4 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड. सॉरी, you don't have P2O5. P2O5, P2O3 नहीं है. Why? When oxygen combines with white phosphorus, whereas you have 4 phosphorus atoms है ना, oxygens are inserted, that's all, as it is. Next, a small story about P4. P4, white phosphorus. P4 N times, red phosphorus. Less stable. Bonds in air with a glue. Believed to be evil spirits. लोग इसको भूत समझते हैं. भूत, दायन, चिंगारी बोलते हैं ना. चिंगारी मीन्स फायर है ना. फायर, स्मॉल फायर, या स्मॉल फायर वाला भूत समझते. क्यों? ये तुमको कब्रिस्तान में ही दिखेगा. क्यों? कब्रिस्तान में ही हड्डी होता है, हड्डी में ही फास्फोरस होता है. बोन्स कंटेन फास्फोरस है ना. व्हाट आर बोन्स मेड ऑफ? बोन्स एंड टीथ. कैल्शियम फॉस्फेट. वेट अ मिनट, मुझे ये चीज समझ में नहीं आता था, पढ़ाता तो बहुत पहले से. CH3PO4 ट्वाइस. ठीक है, ठीक है भाई, बोन्स रहता है, लेकिन इससे व्हाइट फास्फोरस कैसे आएगा? हड्डी से व्हाइट फास्फोरस बनाना आसान है क्या? I never knew the answer for a long time. Almost 25 years I didn't know the answer. Only recently 2-3 years ago, एक बच्चा ने एक क्वेश्चन लाया प्रीवियस IIT का. कैल्शियम फॉस्फेट व्हेन हीटेड विथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कोक, व्हाट डू यू गेट? द प्रिपरेशन व्हाइट फास्फोरस. कब्रिस्तान में हड्डी तो होता ही है. सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोले तो मिट्टी है ना, उसका क्या कमी है? सिलिका,
सैंड एंड कोक रहते हैं ना उधर, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक। कहां से रहता है? हम पेड़ वेड़ जलाते हैं ना, तो रेसिड्यूज नथिंग बट कोक। दीज थ्री एंड हीट तो बहुत रहेगा, यू गेट फास्फोरस, P4 आएगा, एंड दैट burns in air with a glow, which is believed to be evil spirits. Now, इनऑर्गेनिक ना, वो चैप्टर के पीछे सब्जेक्टिव्स रहते हैं ना, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। येलो, बिटवीन Na2O and Na2O2, who turns red litmus white? रेड को व्हाइट बनाना बोले तो हाँ, वेरी गुड, ब्लीचिंग यार, कलर रिमूव कलर, ब्लीचिंग कौन करेगा? पैराक्सी वाला करेगा, ये नहीं कर पाएगा। ये क्या करेगा? हेलो, हाँ, बेसिक ऑक्साइड है ना, रेड को ब्लू बना दे। प्रीवियस IIT क्वेश्चन था, वेरी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। कुछ भी नहीं किया तो क्वेश्चन पढ़ो, आंसर रहने दो। क्वेश्चन दिमाग में डाल दिया तो वो प्रोसेस चलता रहता है, कभी न कभी आउटपुट मिलेगा। क्वेश्चन डालो। मैं 9th 10th बच्चों को ये बोलता था, IIT के क्वेश्चंस पढ़ो जस्ट एंड विजुअलाइज द सिचुएशन। खास में फिजिक्स, क्या बोलते हैं वो? A spring is hung from the top and a rotating disc is kept of diameter 10 centimeters under that, and the spring has 10 spirals. You should visualize the question. 9th में क्या फाउंडेशन करेगा? कैनिज़रो रिएक्शन सीखेगा क्या? वो फिजी वाला तो कैनिज़रो पढ़ा लेता है 9th में, पढ़ा तो सब था। हाँ, नेक्स्ट, why is it less stable here? Tetrahedral, and the PPP angle is equal to 60 degrees, a far cry from the tetrahedral angle 109.5. The maximum possible angle is, maximum possible in a tetrahedral is 109.5. देखना चाहते हो? You make an equilateral triangle एंड जैसे इसका हाइट बदलेगा, क्या बदलता रहेगा? एंगल बदलेगा ना, टेट्राहेड्रल एंगल। सो 109.5, therefore bonds are strained bonds, strained weak bonds, they break easily. मुझे यहां खड़ा होके उस पॉइंट को पकड़ना है तो क्या होगा? बैक ब्रेक होगा, स्ट्रेन होगा। देखो, 3 जने ट्रेन में ऐसा बैठ गए ऑपोजिट सीट्स में, पॉपकॉर्न खा रहे। एक ऊपर बर्थ में है, वो पूछ रहा था मुझे भी दे दो। ये लोग क्या करना है? इनको बहुत झुक के इनको पहुंचाना है। ये इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा। ये नाटक थोड़ी देर चलेगा, अब क्या बोलेंगे? अरे बेवकूफ, नीचे आ जाओ, नीचे आओ तो बे। He is asked to come down, step down. So white phosphorus on heating gives red phosphorus, and the temperature at which, and this change is called a transition. Define transition. One allotrope converted to another allotrope is called transition, and the heats involved are called heat of transition, enthalpy of transition. Then transition temperature. Transition temperature, the temperature at which one allotrope is converted to the other. So alpha sulfur को हीट किया तो क्या आएगा? बीटा आएगा। बीटा को हीट किया तो गामा। Now P4 है ना,
आई थिंक तुम्हारा स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में थोड़ा गलत दिया, E4 वाइड रेड फॉस्फोरस का ऊपर है ना, जो ऊपर है इसको नीचे गिरा दो और ये जाके इन दोनों से बॉन्डिंग में रहेगी, दो फॉस्फोरस हो। ये कौन है? यहां का ऊपर वाला। ये कौन है? इस घर का ऊपर वाला। Like that, it is a giant polymer. Red phosphorus is a giant polymer. Strong. And phosphorus has 36 allotropic forms. And the most stable among them is black phosphorus. I'm telling you, anything black is very stable. Tell you why? Tell me why? When all electrons are lost, you are left only with the nucleus. मान लो कि एक प्लैनेट से, अर्थ है ना, अर्थ में जितने सारे एटम्स है सबका इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दो, यू जस्ट कलेक्ट ओनली द न्यूक्लियस। साइज कितना होगा? एटम का रेडियस कितना? 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, है राइट? 10⁻⁻10 सेंटीमीटर एटम का। न्यूक्लियस का रेडियस कितना? 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एन एटम? 4/3 pi r³ मीन्स 4/3 pi 10⁻⁻30। ये वाला 4/3 pi 10⁻⁻45 मीन्स एकदम 10⁻15 टाइम्स घट गया। अर्थ को लेके 10⁻15 टाइम्स डिवाइड करो, अर्थ बाई 100000000 15 जीरो, क्या बनेगा? इट विल गो टू द साइज ऑफ दिस बिल्डिंग, पूरा अर्थ। एंड व्हेन एवरी इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, आई एम कंसिडरिंग ओनली द न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस को पकड़ रहा हूं, एंड दैट इज कॉल्ड a black hole. What is a black hole? Planet losing all its electrons and all the nuclei coming together, and it will have tremendous attractive power. दिखने में फुटबॉल जैसे दिखता है, लेकिन अर्थ को भी स्वेलो कर सकता है एकदम। Now, so black phosphorus is thermodynamically the most stable. I give you all these examples so that you will not forget. कम से कम ब्लैक होल पता है ना, हाँ, ब्लैक फॉस्फोरस स्टेबल। नाउ so I think yesterday, why don't metals exhibit allotropy? Why don't metals exhibit allotropy? Who are allotropes formed by non-metals? By rearrangement in the bonds. Why are the bonds rearranged? Why did they need rearrangement? Because there was strain in the bonds. They were weak. Weak bonds को strong बनाना पड़ा, and बनाना आसान भी है। बॉन्ड वीक है ना, तोड़ के दोबारा बना सकते। लेकिन यदि मेटल्स में द बॉन्ड्स पहले से ही strong है, they don't require rearrangement and you cannot even rearrange them. दूसरी बात, कल मैंने बोला ना, वाई आर लेस स्टेबल एलोट्रोप्स फॉर्म्ड एट ऑल। अरे लेस स्टेबल है तो फॉर्म क्यों हो गया? मैंने कल क्या एग्जांपल दिया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का बताया ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भूल गए? वाई आर लेस स्टेबल एलोट्रोप्स? अगर एक अच्छा हो सकता है परसों नासिक में पढ़े, वही सेम गाना है ना, इतनी बार गा के मैं खुद बोर हो गया। साल में कम से कम 50 बार गाता हूं। टेप ढीला भी हो गया। वाई आर लेस स्टेबल एलोट्रोप्स फॉर्म्ड एट ऑल? कोई एक टाइम होता था, I was teaching in 25 different classes, 25 बैचेस पूरा साल में।
नईवेली, विजयवाड़ा, हैदराबाद, बोकारो, बड़ौदा, अहमदाबाद, बॉम्बे, नासिक, Pune is the latest edition. Now, did I teach you the reaction of fluorine with water? ये पढ़ा है ना कल? नहीं पढ़ा? हाँ, नहीं पढ़ा है? ठीक. Water is highly stable. Tell me why? OH bond is super strong, minus delta plus delta है ना? एक चीज याद रखना, due to polarity, bond strength increases. Unlike what you think, तुम्हें क्या लगता है? अरे इन दोनों के बीच में दुश्मनी है, तो ये आसानी से टूट जाएगा? नहीं. कोई एक दुश्मन के पास मेरा पैसा रखा हुआ है 1 लाख रुपया, हर रोज इनकी जगह गुड मॉर्निंग सर बोलूंगा, क्योंकि वो गुंडा है ना, क्या करेगा? नहीं देगा. उनका मेरा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है. ड्यू टू पोलैरिटी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. मैंने बताया ना एसिडिक हाइड्रोजन की बात है ना. अच्छा आदमी को गला पकड़ते, बुरा आदमी का गुड मॉर्निंग सर बोलते. देखो दुनिया का रीति रिवाज. क्योंकि अच्छा आदमी से कोई डर नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा करके. लेकिन कोई 420 रहा तो माफिया को तो लाल सलाम. नाउ कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए. लेकिन स्ट्रांग किससे कंपैरिजन से भैया? इससे कंपैरिजन से नहीं. ट्रिपल बॉन्ड है इतना स्ट्रांग नहीं. दैट्स अ ट्रिपल बॉन्ड, दैट्स व्हाट स्ट्रांग. ट्रिपल बॉन्ड है ना. नाउ OH. नाउ water is highly stable. HF bond is the strongest bond. Strongest, of course, covalent bond. We can never compare the strengths of ionic bonds. They are only relative. HF is the strongest covalent bond and OH is the second strongest. Now, so water के ऊपर, वाटर को हीट करो, क्या होता है? हीट कुछ नहीं होता. H2O ही रहता है. गैसीय स्टेट में वाटर का फार्मूला क्या है? H2. सॉलिड स्टेट में वाटर का फार्मूला क्या है? H2. गिव मी वाटर इन लिक्विड स्टेट. ऐसा पूछना है क्या? वाटर पूछा तो काफी. नाउ वाटर को हीट किया तो कुछ नहीं होता. इलेक्ट्रिसिटी भेजा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कुछ नहीं होगा. अरे वाटर बोले तो प्योर वाटर है ना, ड्रेनेज का वाटर थोड़ी है. वाटर मैं बोल रहा हूं तो प्योर वाटर करके याद दिलाना है क्या? वाटर मीन्स वाटर ओनली. नाउ वाटर को हीट करो, कुछ नहीं होता. इलेक्ट्रिसिटी भेजो, कुछ नहीं होता. पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरा दो, कुछ नहीं होता. वाटरफॉल होता है, जलपात होता है. ठीक है ना. तो वाटर को सांप से काटवाओ. ये सब क्यों बोल रहा हूं मैं? टू हाईलाइट दी स्टेबिलिटी ऑफ वाटर. ऐसा वाटर को साथ ये जो अल्कली मेटल्स है ना, क्या करते हैं? सोडियम क्या करेगा? तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तुम्हारा नौकर को गला पकड़ के बाहर भेजना. क्या बनेगा? Na+, OH-, साथ साथ में हाइड्रोजन एटम and lot of heat. A lot of heat is formed because this Na+ gets hydrated ना पानी में. बॉन्ड तोड़ दिया, तोड़ने के लिए 10-15 रुपया लगता है. लेकिन जब बॉन्ड टूट जाएगा, जब Na+ बनेगा, that will be surrounded by millions of water molecules, and because of the interaction between the positive and negative charges, a lot of heat is released, which is called heat of hydration. इतना हीट में क्या होता है? इतना हीट में क्या होता है रे? हाइड्रोजन बर्न्स H2, दोबारा H2O बनेगा. तो वाटर देखो कितना स्टेबल है. सोडियम के हाथ में हार गया, लेकिन दोबारा इट रोज लाइक ए फीनिक्स फ्रॉम द एशेस.
मेटाफर ठीक नहीं क्या? Phoenix from the ashes. Now, hydrogen atom. So sodium, lithium वगैरह, these are all highly reactive. All first group elements starting with calcium, the second group ones. मैग्नीशियम इतना रिएक्टिव नहीं है, तुमको मालूम है ना? लिथियम टू सीसियम, कैल्शियम टू बेरियम, हाईली रिएक्टिव. दे कैन रिएक्ट इवन विथ कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर देंगे. व्हाट अबाउट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम? कोल्ड वाटर में कुछ नहीं होगा. इसके ऊपर वाटर डाला तो क्या होता है? कुछ नहीं होता. हॉट वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर देंगे. व्हाट अबाउट आयरन? रिएक्ट्स विथ स्टीम ओनली. It reacts only with steam. Zinc वगैरह, they react with dilute acids only. Copper, silver, हाँ, concentrated acids में dissolve होंगे. And gold, why is gold gold? Why is gold gold? देखो, कोई भी अच्छा चीज है तो हम क्या बोलते हैं? सर दिस इज गोल्ड, दिस इज लाइक गोल्ड. HC वर्मा इज गोल्ड, मीन्स वेरी यूजफुल. आई एम आस्किंग यू, व्हाई इज गोल्ड गोल्ड? गोल्ड इज गोल्ड बिकॉज गोल्ड रिमेन्स गोल्ड फॉर एवर. गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, मीन्स रिएक्ट नहीं करेगा किसी के साथ भी. गोल्ड रिएक्ट्स ओनली विथ एक्वा रेजिया. What is aqua regia? It is a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3. इसको कोई तैयार नहीं रखते घर में, ठीक है ना? जब जरूरत है, अब गोल्ड स्मिथ्स वगैरह दे मेक इट एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सीडेंटली लूजिंग गोल्ड. सर गलती हो गया, एक्वा रेजिया में गिर गया. एक्वा रेजिया क्यों मेरे घर में? दैट्स यू हैव स्टडीड दिस इन योर चाइल्डहुड इटसेल्फ. क्लास 9-10 में ICSE वाले सिर्फ यही पढ़ते, कुछ नहीं. ICSE वाले सिर्फ कुछ नहीं पढ़ते, रिएक्टिविटी सीरीज बस. नाउ सो इतना नो, मेरा आदत क्या है? बहुत ज्यादा लिखा तो तुम्हारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है. आई राइट ओनली वन थिंग एट ए टाइम. एक चीज लिखा, वो हो गया. बहुत डिफिकल्ट है बार बार डस्टर उठा के, फिर भी आई मेक इट ए पॉइंट. एक पॉइंट लिखो, वो हो गया हाईलाइट, गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. डोंट मिक्स कॉन्सेप्ट्स. जनरली सबका आदत अलग अलग है. समा ये बोर्ड आने के बाद हमारा जिंदगी आराम हो गई. एक दिक्कत गया, दूसरा दिक्कत आया. दिस इंक इज ऑर्थोक्साइलिन, दिस इज हाईली पॉइजनस, एलर्जिक. स्किन एलर्जीज भी आएगा. हर क्लास के बाद पानी धोना है, पानी से धोना है. लेकिन मेरा आदत नहीं है. नो, पहले वो चौक का एलर्जी होता था, अभी एक्साइलिन का एलर्जी. नाउ एक नारियल ले लो, इसका 3 आंखें रहता है ना? याद है तुमको एग्जाम्पल? नहीं, पिछले साल पढ़ा है ना? वो जो है ना आंखें, उसको फोड़ दो, वहां वैक्स के साथ सील करो. वैक्स, कैंडल वैक्स रहता है ना, लेकिन उस वैक्स का अंदर लिथियम रखो. वैक्स अंदर लिथियम रखो. वैक्स इज ऑल्सो ऑफ द कलर ऑफ द स्किन ऑफ कोकोनट. वो स्कल है ना, वो ब्राउन कलर, ब्राउन व्हाइट कलर में रहता है. सबको दिखाओ ऐसा. ये देखो नारियल, इसको पकड़ो, फोड़ दो. फोड़ते टाइम इसको थोड़ा अंदर घुसा दो, वैक्स को. क्या होगा? नारियल का पानी आएगा, उसमें लिथियम है, आग आएगा. ओम शांति शांति शांति. बाबा RSN.
कूल 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 कूल। पढ़ा के बोर होके मैं ऐसा लेटर में पढ़ा था। नाउ सो water is highly stable, no one can do anything to water. Now फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन ऑक्सीजन की घर जाके ऑक्सीजन को गला पकड़ के बाहर फेंक दे। दैट इज द सो फ्लोरीन इज सपोज टू बी द चैंपियन अमॉन्ग ऑल एलिमेंट्स। HF आएगा 2HF प्लस एक ऑक्सीजन। समझ में आया? ऑक्सीजन इज किक्ड आउट। व्हाट हैपेंड टू ऑक्सीजन? एनीबॉडी? डिड यू नोटिस अ चेंज? -2 to 0, -2 to oxygen from minus. Oxygen is oxidized. The very name oxidation is based on oxygen. Such an oxygen is oxidized. Quite strange. Now write down the reaction. F2 plus H2O क्या बनेगा? 2HF plus O। 2F2 plus 2H2O, 4HF plus O2, 3F2 plus 3H2O, 3, 6HF plus O3. What is the net reaction? 5F2 plus 5H2O, you get 10HF plus O2 plus O3. What is this called? Ozonized oxygen. Interesting question is waiting. Gas plus liquid neutral oxide gives XYZ. X HS glass. Glass dissolves in X. Glass हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डिसॉल्व होता है। Y and Z are allotropic gases. Allotropic gases. बताओ कौन सा गैस एलोट्रोप है? कार्बन तो सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है। नाइट्रोजन डजंट एग्जिबिट एलोट्रोपी, फास्फोरस तो सॉलिड है। The only gas that exists in allotropic forms is oxygen, O2O2. ठीक है ना? So ozonized oxygen. Now, therefore, when fluorine reacts with water, what happens? A flood of oxygens come. Flood of oxygens. Flood. बाढ़ आ जाएगा ऑक्सीजन का। उसमें क्या हो सकता है? कभी कभी 2 कंबाइन होके O2 बनाएंगे, कभी 3 एक साथ में कोलाइड किया तो O3। 3 एटम्स कैन ऑलवेज कोलाइड ना। 3 एक साथ में आ सकते हैं ना? हो सकते हैं। 4 नहीं होगा लेकिन 3 होगा। So therefore why are less stable allotropes formed at all? Why are less stable allotropes formed at all? Because chemical reactions, elements are formed as a result of violent reactions. Elements are formed. Violent means not explosive, fast, kinetically fast. Kinetically fast. ठीक है ना? Elements are formed as a result of violent reactions. Therefore, in that hurry, even less stable allotropes are also formed. Group. देखो, World Trade Center was bombarded. लोग यहां दौड़ रहे, भाग भाग के बाहर आ रहे, अफ्रेड ऑफ। तो वहां जो भी गाड़ी मिलेगी उसमें उसका अंदर बैठ के चले जाएंगे। 2-3 किलोमीटर जाने के बाद अब देखते रहेंगे मेरा दोस्त कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है।
because that was an emergency. You cannot wait for the right vehicle. ये गाड़ी मेरा नहीं है, मेरा गाड़ी में बैठूंगा. देखो, एक ट्रेन है, प्लेटफॉर्म में 1 मिनट रुकने वाला. 100 बच्चों को पिकनिक में जाना है. मेरा टिकट S1 में है, तुम्हारा S2 में है, किसी का S3 में है. वी वोंट वेट फॉर आवर कंपार्टमेंट. पहले क्या करते? सबसे पहले अंदर चलते थे, उसके बाद आराम से क्या करते? रीग्रुपिंग. तुम्हारा ग्रुप के साथ तू जाएगा, ठीक है ना? दैट इज हाउ फर्स्ट लेस स्टेबल एलोट्रोप्स आर फॉर्म्ड एंड देन they stabilize themselves by rearranging the bonds, strengthen themselves. ठीक है ना? इतना पढ़ाने के बाद एक बार मैं कोई 9th क्लास को पढ़ा रहा था, ऐसे मजे में, बड़ौदा में. ये बता रहा था वाटर इज हाईली स्टेबल, ये वो करके. सामने डेस्क पे किसी का बायोलॉजी का टेक्स्ट है, साइंस टेक्स्ट बुक. मैंने वैसे इसको ऐसा खोला तो देयर इज ए रिएक्शन कॉल्ड फोटोलिसिस. डर गए हमें. मीन्स जो मैंने अभी तक पढ़ा के आया उसका एंटीथीसिस है. कैसे? व्हाट इज फोटोलिसिस? पानी के ऊपर लाइट गिरा तो वो क्या बनेगा? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस O2. एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स ओनली आर used for the electron transport system. प्लांट्स वगैरह में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तूने भी पढ़ा होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम. ठीक है ना? ये क्या है फिर? भैया, दैट टेक्स प्लेस इन नेग्लिजिबल क्वांटिटीज. ठीक है ना? मिलियन मॉलिक्यूल्स में से एक होगा, है ना? ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा. उतना इलेक्ट्रॉन काफी है, कम क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन काफी है. Photolysis. Next, what next? Allotropy हो गया. All about allotropy. NO2, all about NO2. And therefrom we go to the color. Draw the structure N double bond O. 1, 2, 3, 4, 5. Single unpaired electron. Tell me whatever you know about reddish brown colored. Now 2 bond pairs, half a lone pair. ये भी इधर उधर घूमता रहेगा ना. बेंट शेप. 5 + 0/2. 2.5. नेक्स्ट इंटीजर 3 sp2. चलो. पैरामैग्नेटिक. हाउ डू यू नो? 7 + 16 23. ऑड. पैरा. What else you know? What else you know? Acidic oxide. What else you know? Mixed anhydride of mixed anhydride of HNO3 HNO2. है कि नहीं? Dimerizes. How does it dimerize? N double bond O, dative bond O. Normal covalent bond. Unpaired electron, dimerization through unpaired electron pairing. Unpaired electron pairing. This is diamagnetic and this is colorless. Bus. What is the reason for color of NO2? Why is NO2 colored and why is N2O4 not colored?
लोन पे, हाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा तो क्या होता है? बाकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन नहीं करते क्या? हाँ, बाकी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहा तो वो ट्रांसमिशन नहीं करेंगे, लेकिन विजिबल लाइट लेके कर, कोई बात नहीं, पता। दिस इज फेवरेट सब टॉपिक, रीजन फॉर कलर समहाउ spectroscopy is my favorite subject. A lot of interest in spectroscopy, but got very poor marks in my post graduation. ठीक, उसमें 30 प्रैक्टिकल का है, बाकी 20 out of 80। उसमें ना ज्यादा डेटा याद रखना। हियर आई गिव ओनली क्वालिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव हु कैन रिमेंबर द वैल्यूज, दोस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ्स, आल्डिहाइड्स का फ्रीक्वेंसी कितना, वो भी यूवी फ्रीक्वेंसी कितना, 4000 है 5000 है करके पूछते। मैं क्या करता था, एक पेज में 4000 लिखता था, दूसरे पेज में 5000 लिखता, जो करेक्ट है उसका नंबर दे दो। लेकिन अभी तुम्हारा सीबीएसई वाला क्या किया है, क्वेश्चन नंबर वही देते, इसका जवाब इधर ही लिखो करके। हमारा टाइम ऐसा नहीं होता। विच इज मोर एसिडिक, एसिटिलीन और इथाइन, एक पेज में मैंने एसिटिलीन लिखा, दूसरा पेज में इथिलीन लिखा, जहां करेक्ट है वहां नंबर दो। वो 20 नंबर भी ऐसा है। Now, yes, just few minutes. Light is useless. I was teaching this sometime in Chennai. वहाँ उस डायरेक्टर का फादर वेरी ऑर्थोडॉक्स पर्सन, वो एक्सीडेंटली क्लास में आया था, ये देख के हाँ शॉक हो गया। दीपम ज्योति परब्रह्म तू क्या रुपये, लाइट इज यूजलेस करके बोलता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, लाइट अगर इसके ऊपर गिर गया तो मेल्ट होगा क्या? डज लाइट हेल्प इन मेल्टिंग? नो, लाइट डजंट डू एनीथिंग, इट कॉजेस दी sensation of sight, that's what makes us see. It can only excite the electrons. It can only excite the electrons. I know what doubt you all have in mind. Occasionally ionizes. Photoelectric effect है ना? That photoelectric effect is strictly there only in potassium, rubidium, cesium. Potassium, rubidium ओनली 3। लेकिन तुम्हारा फिजिक्स वाला क्या बोलता है, हम तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते, वो लोग ऐसा नहीं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन को भी निकाल देते। एक्सरेस डाल के इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको भी फोटो इलेक्ट्रॉन। नो नो नो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड बी नेचुरल, विजिबल लाइट से होना है। नाउ इट कैन ओनली एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स, occasionally ionizes, rarely, occasionally ionizes, as in the case of potassium, rubidium, cesium. Visible light ionizes them, photoelectric effect. Go down. Now, and vice versa. What is this vice versa? Electrons excite, electrons are excited by light and light can only excite electrons. ठीक है ना? एक बच्चा है, उसको 1000 रुपया नोट दे दो, क्या करेगा? फाड़ के फेंक देगा, मुझे क्या चाहिए? He will not be excited with 1000 rupees, but give him a chocolate. Ha ha ha, thank you, thank you, thank you. But चॉकलेट से सिर्फ बच्चा ही खुश होगा, बच्चा सिर्फ चॉकलेट से ही खुश होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए क्या लगता है? लाइट लगता है।
लाइट ही लगता है। नाउ देखो, एक इलेक्ट्रॉन कुछ लाइट लेके ऊपर चला गया, समझ लो ब्लू कलर्ड लाइट। व्हेन द इलेक्ट्रॉन गेट्स डीएक्साइटेड, डीएक्साइट हुआ तो क्या होगा? वही लाइट वापस आएगा ना, विजिबल लाइट लेके गया, वही विजिबल लाइट वापस आया, वो लाइट हमको दिखेगा, वो कलर हमको दिखेगा। दैट इज द रीजन फॉर कलर। सो विच सब्सटेंस विल बी कलर्ड? A substance in which there is a loosely held electron which gets excited even with chocolate. चॉकलेट देने से खुश होने वाला छोटा बच्चा उस कंपाउंड में होना चाहिए। चॉकलेट से खुश होने वाला, चॉकलेट दे तो मैं खुश हो जाता हूँ क्या? 10 दिन पढ़ाने के बाद ललित सर मुझे एक पैकेट चॉकलेट पैकेट दिया था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं ना, ही पेड मी लॉन्ग एगो। नाउ 2, cosmic rays, gamma rays, UV, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, infrared, micro, radio. What are all these collectively called? What are all these called? Electromagnetic radiations. There is nothing called electromagnetic spectrum. Electromagnetic radiations. Electromagnetic spectrum is only an imaginary array. Why? Why? There is no source which gives you all of them. सोलर स्पेक्ट्रम कैसे तैयार करेंगे? सनलाइट। एक्सरे स्पेक्ट्रम कैसे तैयार करेंगे? यूवी है, गामा, एक्सरेज, यूवी। एक्सरे स्पेक्ट्रम कैसे तैयार करें? कुछ नहीं, कैथोड रेस को कोई मेटल टारगेट पे डिफ्लेक्ट करा दो, वापसी में एक्सरेज आता है, उसको फोटो निकालो। यूवी के लिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लो, सॉरी गामा के लिए। सो दिस इज ओनली एन इमेजिनरी एरे arrangement. Now, which part of this is called light? FGR is only light, huh? All are light, huh? X-rays is also lighter. UV to IR is light. From UV to IR, this is called light. And VGR, violet to red, is visible light. This part is called visible. Now, cosmic rays have maximum energy among them. Maximum energy, maximum frequency, maximum wave number, minimum wavelength. So these are the shortest waves. वो सबसे छोटा कॉस्मिक रेस है। इनका एग्जिस्टेंस अभी तक प्रूव नहीं हुआ कॉस्मिक रेस का, लेकिन एवरीबॉडी सेज कॉस्मिक रेस आर देयर। व्हाट आर दे डूइंग? अर्थ का जो चार्ज है ना, so many electrons have been released from substances, that is being neutralized by cosmic rays, though they don't have charge. So left to right क्या होता है? Everything decreases. Everything decreases except wavelength. Wavelength बढ़ता आएगा. Now, so between UV and visible, UV has relatively more energy, less energy. समझ आ रहा? Now, याद रखना, all electrons in all substances always get excited.
सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो एक्साइट नहीं होने वाला, लेकिन एक्साइट होंगे क्या लेके? लाइट लेके। द क्वेश्चन इज cost, whether you require UV or visible. Suppose a pair of electrons which is strongly held by the nucleus wants UV for, देखो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा either UV or visible, कोई तीसरा नहीं। अयो वही बाकी दिया तो क्या होता है मुझे मालूम नहीं। एक्सरे से लगा है तो आयनाइजेशन हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट अदर एनर्जीज विल डू। एक्सरे दे सकते हो, लेकिन एक्सरे से इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा। एक्सरे से इलेक्ट्रॉन का गला कट जाएगा। दे आर आयनाइज्ड, सेंट टू द गटर। नाउ सो सपोज ए सब्सटेंस टेक्स यूवी लाइट, यूवी लेके ऊपर गया, यूवी लिया तो क्या होता है? इन्होंने यूवी ले लिया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सात का सात छोड़ दिए, सातों सात छोड़ दिया तो दैट इज व्हाइट, कलरलेस। ब्लैक एंड व्हाइट आर नॉट कंसिडर्ड टू बी कलर्स, ब्लैक एंड व्हाइट। सो एक सब्सटेंस सारे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सब कुछ खाया, कौन सा रंग में दिखेगा? ब्लैक। ऑल लाइट हैज बीन swallowed, all light has been reflected. Now, so last sentence for the D. Oh, we have covered great ground. 15 केस है कलर में, 15 cases. They take roughly 15 into 10 minutes पकड़ो, 150. कल सुबह वही हो गया। Now, a substance is colored if only it contains loosely held electron, electron pair, pi bond, atom, anything that is excited with visible light. visible light लेके excite होने वाला कोई भी एक पार्ट रहना है। visible light लेके excite होगा, वापसी में वही visible light हमको दे देगा, and that is called color. visible light वापस आ रहा तो color दिखेगा। Like yesterday, इसको सेफ कस्टडी में रखेगा, इधर रखा तो गायब हो जाता है। प्लीज बंद।